After taking on the Aam Aadmi Party in Delhi, the BJP is now taking on Arvind Kejriwal's main man in Gujarat. I'm Barkha Dutt, you're with the Mojo story. Today we are focusing on Gopal Italia. Gopal Italia is, as I said, the AAP chief in Gujarat, where the Aam Aadmi Party is playing a high-stakes battle to take on the BJP on the Prime Minister and Home Minister's home turf. The controversy has, of course, erupted after Mr. Italia was accused of using derogatory language for both the Prime Minister and his elderly mother. Old videos from a few years ago have gone viral and been shared online by every significant BJP leader. Now remember, these videos show Mr. Italia using the word Neech for the Prime Minister and Notanki Baz drama for his mother. The BJP has gone all guns blazing. Mr. Italia was summoned by the National Commission for Women. Thereafter, he was detained for a few hours. The Aam Aadmi Party is calling this an attack on all patidars and saying that the BJP is yet again showing its fear of the Aam Aadmi Party. What will be the political consequences? Remember, this is now involving the Prime Minister and his mother directly. The Prime Minister, as survey after survey shows, continue to enjoy extraordinary popularity ratings in his home state. Let's introduce our panel on the program today. Joining us on the program, first up is Hardik Rajgor, who's a writer and commentator. Good to see you, Hardik. Arati, Jerath, senior journalist and columnist, is with us. Also joining us today is Dr. Shraddha Rajput. She's a spokesperson of the state BJP. Also joining us, an Aam Aadmi Party supporter. The Aam Aadmi Party is not officially taking part in this conversation. Aqueel Khan is there, though, valiantly defending the party. Aqueel Saab, good to see you. And also joining us, our favorite psephologist and pundit, Yashwant Deshmukh, whose Sea Voter survey, along with ABP, has some very interesting forecasts for Gujarat. आप सबका बहुत स्वागत है. इस लैंग्वेज, आज लैंग्वेज को थोड़ा मिक्स रखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर, ताकि we are also able to reach our audiences in Gujarat. शुरू करने से पहले, सबसे पहले गोपाल इटालिया ने क्या बोला अपने पुराने वीडियोस में, आप देखिए. इस्तेमाल हो रहा है. आप नीच किस्म के आदमी, मुख्य वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन आज यहाँ पे चुनाव चल रहा है. मुझे आप सब लोगों से जानना है कि क्या भूतकाल में कभी भी किसी भी बड़ा प्रधान ने ऐसा नौटंकी किया है वोट देने जाने के लिए. नीच नरेंद्र मोदी ની સભાનો ખર્ચો કેમ નથી માંગતા તમે? નીચ કિસ્મનો માણસ, એનો ખર્ચો માંગો. હીરાબા આવીને પાછા નાટકો કરે, આપણને બોલતા શરમ આવે એટલી મોટી ઉંમરના વ્યક્તિ વિશે, પણ એ લોકો નથી શરમાતા. 70 વર્ષનો મોદી થવા આવ્યો, હીરાબા પોતે 100 પહોંચવા આવશે, તોય મારા બેટા બે માંથી એક નાટકો બંધ કરતા નથી. Okay, so as I said, the word Neech used for the Prime Minister, dramebaz, notanki baz, I'm translating it loosely from the Gujarati used for his mother. I want to start with Yashwant. Yashwant, before we actually bring up the slides of your survey, the fact is that your survey has shown one thing. One, कि BJP की सबसे बड़ी जीत of previous elections आपके सर्वे के मुताबिक होने जा रही है इस चुनाव में, लेकिन साथ ही साथ आप आम आदमी पार्टी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के रूप में उभर कर आ रहा है. ये सर्वे जो था, ये इस एपिसोड से पहले हुआ था. आपके मुताबिक क्या असर होगा ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, जहां प्रधानमंत्री को निशाना बनाया गया है? वीडियो पुराने हैं, आम आदमी पार्टी कहती है ये कंस्पिरेसी है. आपको क्या लगता है इसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? बरखा, इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. आप जानती हैं कि हर राज्य में अपने यहाँ पर बेसिकली अगर प्रो बीजेपी और प्रो मोदी सेंटिमेंट है, तो उतना ही बड़ी तादाद में एंटी बीजेपी, एंटी मोदी सेंटिमेंट वाले भी लोग हैं. मेरा मानना यह है कि इस पूरी कंट्रोवर्सी से बीजेपी के जो भी ऐसे वोटर हैं जो स्टेट गवर्नमेंट से या सीएम से या अपने एमएलए से जो नाराज हैं, वो थोड़े से वापस बीजेपी के लिए पोलराइज होंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बरका, वी ऑल नो दैट व्हाटएवर बीजेपी इज गेटिंग नॉट जस्ट इन गुजरात बट इन एंटायर इंडिया इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ देयर प्राइम मिनिस्टर, आवर प्राइम मिनिस्टर, आई शुड नॉट से देयर प्राइम मिनिस्टर बट देयर लीडर नरेंद्र मोदी इन दैट वे. ऑन द अदर हैंड बरका, ये भी हमको दिमाग में रखना चाहिए कि गुजरात में 40% ऐसे वोटर हैं जो कंप्लीटली एंटी बीजेपी हैं. लड़ाई असल में उसकी हो रही है बरखा. लड़ाई इस बात की नहीं है गुजरात में कि बीजेपी जीत रही है या नहीं जीत रही है.
दैट इज अ फॉरगॉन, ऑलमोस्ट फॉरगॉन कंक्लूजन। किसी भी पार्टी को जो 50% के आसपास वोट पा रही हो और सामने अपोजिशन बिखरा हुआ हो, तो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड कि वो पार्टी जीतेगी या स्वीप करेगी। लड़ाई असली बरका ये हो रही है कि नंबर 2 कौन रहेगा और बीजेपी का प्रिंसिपल अपोजिशन कौन बनता है। बाइपोलर हम लोग इतने सालों से गुजरात को मानते रहे। आफ्टर 1989 काइंड ऑफ थिंग, Congress and BJP has been 1995 onward, I can say that Gujarat has remained bipolar. कोई तीसरे मोर्चे की वहां पे कोई गुंजाइश कभी नहीं थी। पहली बार ये हो रहा है 30 सालों में कि एक तरह से तीसरा मोर्चा या तीसरा नाम वहां पे आ रहा है, और लड़ाई दरअसल कांग्रेस और आप की है बरखा। अगर तो आम आदमी पार्टी इसी तरीके से अपने ग्राफ को बढ़ाती रहती है तो कांग्रेस के सामने संकट खड़ा हो जाएगा अपने अस्तित्व को बचाने बट का। ये जो कंट्रोवर्सी हुई है यशवंत, व्हाट इम्पैक्ट कुड दिस हैव ऑन द आम आदमी पार्टीज पॉपुलैरिटी? एंड बिफोर यू आंसर दैट, एक आप ही की सर्वे का एक स्लाइड में दिखाना चाहती हूँ। जब पूछा गया हु इज द मोस्ट पॉपुलर कैंडिडेट, नॉट दिस वन बट द अदर वन, हु इज द मोस्ट पॉपुलर कैंडिडेट फॉर चीफ मिनिस्टर, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट दैट वी गॉट. भूपेंद्र पटेल ऑफ कोर्स लेड योर सर्वे, लेकिन आम आदमी पार्टी जिसका कैंडिडेट नेम भी नहीं हुआ उसको 16% पॉपुलैरिटी मिल रही थी. नाउ यशवंत, आई एम आस्किंग अ डायरेक्ट क्वेश्चन. प्राइम मिनिस्टर को इस कंट्रोवर्सी में घसीट कर, विद दिस वीडियो, विद द यूज ऑफ द वर्ड नीच, व्हिच द बीजेपी विल आल्सो कॉल कास्टिस्ट, दे विल इन्वोक हिज ओबीसी आइडेंटिटी, आपको क्या लगता है क्या असर होगा इस ग्राफ पे? देखिए, इस पूरे चीज में एक अंतर हो गया कि आम आदमी पार्टी के पास में कोई चेहरा तो गुजरात में था नहीं बरका। Only thing is that largely is going to happen that because of this controversy, probably Gopal Italia's name has gone across the board and across that thing. So sometimes, as they say, even the bad publicity is a good publicity. At least for the BJP haters and Modi haters, there is now a name that somebody who is there. I mean, that way. So I mean, purely from the political perspective, on one hand, I can tell you that the shaky BJP voter might cling further to BJP and Modi, but the anti-BJP voter, I think this entire controversy might actually help Aam Aadmi Party. I feel that no, I mean, in that context, no publicity is bad publicity. That's very interesting because you're saying that the real fight is for the number 2 position, और वो नंबर 2 की लड़ाई में शायद ये कंट्रोवर्सी, शायद गोपाल इटालिया का कोई नाम इतने लोग नहीं जानते थे कुछ हफ्ते पहले, अब सब नाम जानते हैं, लेकिन स्मृति ईरानी ने उनको निशाना बनाया. She called him a gutter mouth. Before I come to Dr. Shraddha, let's listen it. आम आदमी पार्टी के इस नेता ने प्रधान सेवक की 100 वर्षीय मां का अपमान मात्र इसलिए किया क्योंकि वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं. मैंने जितना गुजरात और गुजरातियों को अपने जीवन में समझा है, मैं अरविंद केजरीवाल जी से 2 शब्द साफ कहना चाहती हूं. राजनीतिक हार. गुजरात में आम आदमी पार्टी का यही भविष्य आगामी चुनाव में होने वाला है. Okay, so there was Smriti Irani calling Mr. Italia a gutter mouth and saying कि भविष्य में पार्टी चुनाव हारेगी. ये बात साफ है. श्रद्धा जी, अब मैं आपको लाना चाहती हूँ, इस पे आप क्या टिप्पणी देंगी? देखिए बरखा जी, गोपाल इटालिया के अगर आप इतिहास को उठा के देखें तो मैं यशवंत जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं. उन्होंने हमेशा ऐसे ही स्टेटमेंट दिए हैं जिससे पॉपुलैरिटी हो, ये उनका माइंडसेट है. क्योंकि उन्होंने क्या किया, यहाँ की जो पूर्व गृह प्रधान थे, जब वो गृह प्रधान थे और विधानसभा परिसर के अंदर ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रदीप सिंह जाडेजा उनके ऊपर जूता उठा के फेंक के मारा टू गेन द पॉपुलैरिटी. और उसके बाद उन्होंने वो सारे स्टेटमेंट दिए. उन्होंने हिंदू देवी देवता का, मैं कभी भी किसी रिलीजन को ऐसा नहीं कहती कि इसका ये इसे फॉलो करो, इसे मत फॉलो करो, ये अपनी आस्था का सवाल है. बट मेरा ये मानना है कि आप एक ही रिलीजन को टारगेट करते हैं, दूसरे को नहीं करते, इसका मतलब आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं. तो वह कहना है तो सबके लिए कहो, अगर नहीं कहना तो किसी के लिए मत कहो. उसके बाद जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए आज शब्दों का यूज किया है,
हम सब आए हैं पॉलिटिकल में, हमें किसी ने फोर्स नहीं किया है पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए। हम सब लोग अपनी पब्लिक लाइफ में आए हैं, बाय अपने इंट्यूशन से आए हैं, अपनी वजह से आए हैं। तो ये हमारी जवाबदेही है कि हमें बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली भाषा का यूज करना चाहिए, जो कि गोपाल इटालिया जी ने नहीं किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर जातिगत टिप्पणी भी की। उन्होंने ये नहीं देखा कि जिससे आप 70 साल का बोल रहे हैं, वो 70 इयर्स का इंसान टायरलेसली हमारे देश के लिए काम कर रहा है, उनके आलोचकों को भी मुंह में उंगली डाल देनी पड़ती है जिस तरीके से वो काम करते हैं ये देख के। और उसके बाद जो उनकी माता जी के लिए जो शब्द यूज किया है, माँ किसी की भी हो, माँ आपकी मेरी इस पैनल पे बैठे और पूरे भारत में किसी की भी हो, माँ माँ होती है। हम हमारे दुश्मन को भी मिलते हैं, उसके बावजूद में उनकी माता जी होती तो पहले झुक के उनके भी आशीर्वाद ले लेते हैं। उनके लिए भी हमारी सभ्यता है, संस्कृति, हम सबको रिस्पेक्ट करते हैं। इसको तार तार करके उन्होंने हीराबाग के लिए जो शब्दों का यूज किया है, तो अगर आज आप पूरे दिन गुजरात में देखे, गुजरात का सोशल मीडिया देखिए और गुजरात की जो बहनों को देखिए, जितनी भी महिलाएं यहाँ पे बहुत ही क्रोधित है, और उन्होंने सबने सोशल मीडिया पे अपने वीडियो खुद अपलोड किए, सोशल मीडिया पे पूरी कैंपेन चलाई है और ये अश्योर किया है कि कोई भी महिला ना आम आदमी पार्टी को तो वोट वैसे भी नहीं देने वाली है, लेकिन उसका हो सकेगा उतना जो इस चीज का जो रिवेंज है, ये यहाँ की जो महिला शक्ति है पॉपुलैरिटी पे तो लेने ही वाली है। क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के लिए क्या है, ये गुजरातियों को 6.5 करोड़ गुजरातियों को पता है। ये वो गुजरात है कि जो पानी की समस्याओं से जूझ रहा था और आज कहाँ आया है। बहुत सारे हमारे प्रश्न रहे हैं, हम ऐसे ही उनके दीवाने नहीं है मोदी जी के। उन्होंने काम किया है, उन्होंने कर बताया है, तो ये पॉपुलैरिटी हासिल की। ऐसे बैठे बैठे उन्हें ये पॉपुलैरिटी नहीं मिली। उन्होंने गोपाल इटालिया की तरह गंदे शब्दों का प्रयोग करके इस देश में पॉपुलैरिटी नहीं पाई है। उन्होंने मेहनत की, 24 घंटे 365 दिन प्रधानमंत्री जी ने, तब जाके पॉपुलैरिटी मैं पाई आपसे है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, देन आई वांट टू गो बैक टू यशवंत बिफोर आई ओपन इट अप। श्रद्धा जी, अगर आप सर्वे, यशवंत जी का सर्वे कहता है कि बीजेपी इज सेट टू मेक इट्स बिगेस्ट एवर विन पॉसिबली इन गुजरात, तो आपको आम आदमी पार्टी पे आप लोग इतनी एनर्जी क्यों स्पेंड करते हैं? आम हम आदमी पार्टी कहा, हम नहीं कर रहे हैं एनर्जी स्पेंड बरखा जी। वीडियो आया, लोगों ने इसका रिएक्शन दिया है, और क्यों ना दे। जब बात आपके लीडर की, प्रधानमंत्री की या उनके माता जी की होती है, अगर किसी पार्टी के लीडर जैसे प्रधानमंत्री हम सबके हैं, लीडर वो हमारी पार्टी के, तो एक्शन रिएक्शन तो आएगा ही ना बरखा जी। अब हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि आप जो जाए जिसको भी, मतलब देखिए भाषा संयम में सबके लिए होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक के लिए होनी चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम तो बोलेंगे कि अगर हमारे लीडर के बारे में, उनकी माता जी के बारे में बोले तो डेफिनेटली बोलेंगे। और मैं नहीं बोल रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रही है। आप आके गुजरात में देखिए, अभी भी आप अपना कोई भी यहाँ पे हो उसको भेज दीजिए, आप सर्वे कीजिए, पूरे 6.5 करोड़ गुजराती बोल रहे हैं। ये अच्छा, गुजरात की भावना है। एक minute. I want to just bring in Yashwant before I open this up for the panel. If we come out of these pictures, Shraddha ji जो point कर रही है कि this is about the pride of the Prime Minister, Yashwant. And very interestingly, if we bring up some slides of your own survey, one thing is clear, and if we can see this, that when asked how is the Prime Minister's work, the people polled said 60%. 60% said it's good. Now, his popularity, like in so many other states, is higher than his state governments. This we saw happen in Uttarakhand, where the chief minister actually lost. So you see the difference. Only 42% of the people of Gujarat call the Gujarat government's performance good, but the prime minister, Yashwant, as you can see, 60% are actually giving a thumbs up to the prime minister. So Yashwant, my question to you is quite simply this. Now that the prime minister has been directly targeted in these viral videos, why do you think this will help the Aam Aadmi Party and not the BJP sweep ahead even more handsomely? No, BJP will sweep. I mean, it's only, I'm not arguing on the BJP. See, I said that all-time high numbers for the BJP for simple reason that the opposition vote is going to be split, and it's going to be a vertical split. So obviously, the Patidar Andolan is no more there. 3 लड़कों में से 2 लड़के बीजेपी के पास में चले गए उस पूरे चेंज के जो 5 साल पहले जो हल्ला मचा था. And all of a sudden, this entire equation is only and only, working in favor of the BJP, in despite of the fact that Barkha, as you mentioned, PM is in the 60s, BJP is in the 40s, and CM is in the 30s. So you can understand that not everything is in pink of the shape in Gujarat or any other state. I mean, similar patterns we can observe in all other states as well. However, why BJP is so bothered about Aam Aadmi Party, Barkha? 2 reasons. Number 1, right now the rise of Aam Aadmi Party is actually helping them.
big time, because it is splitting the opposition vote. But I think the BJP is also kind of trying to do a detained explosion kind of thing or something like that, where they can also control the narrative in a way, because they know if the Aam Aadmi Party actually becomes more than vote katwa, if it becomes somehow they cross around 20% marks in vote share, then we are looking at a scenario which could be like a Punjab kind of a scene, where this becomes a kind of a first step for Aam Aadmi to establish itself as a principal opposition to the BJP, and 5 years down the lane as the challenger to the BJP. So BJP is not really completely comfortable. They want Aam Aadmi Party to grow, but they do not want them to cross a threshold where it actually eats up the Congress, and 5 years down the lane it becomes a huge migraine for the BJP on how to tackle it. So basically ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को वीकर या खत्म कर दे, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो जाए कि अपने बलबूते पर एक फोर्स बन पाए. गुजरात में आप जानती हैं कि हम लोग सभी लोग वहां पे बहुत सारे लिटरेचर में तमाम कथाओं का जिक्र करते हैं, और उन कथाओं में एक भस्मासुर की भी कथा है, जिसको आशीर्वाद दे के पैदा जरूर किया था और बाद में वो वापस लेके दौड़ा तो क्या हालत हुई थी. तो ये एक अलग किस्म की कहानी है, जिसमें अभी आम आदमी का आगे बढ़ना ये बीजेपी के लिए बहुत फायदे का सौदा है. आप बीजेपी के लोग शायद बहुत खुश भी हो जाएं, लेकिन जो बीजेपी के शायद समझदार लोग होंगे वो ये भी डरेंगे कि ये अगर इसको जरूरत से ज्यादा अगर बढ़ा दिया गया तो 5 साल बाद ये बहुत बड़ा सिरदर्द भी हो जाएगा ये मसला. I think that is what at this point of time this entire thing looks like, Barkha. Okay, Yashwant, I know you have to leave a little early today, so stay as long as you can. Thanks as ever for joining us. Let me take this to Aqueel Khan, just to repeat, if you're wondering why an official representative of the Aam Aadmi Party is not here, the party is not participating in subjects on this debate. लेकिन Aqueel Khan साहब यहाँ हैं, वो defend कर रहे हैं अपनी पार्टी जिसको वो support देते हैं. Aqueel साहब, 2 blows for the Aam Aadmi Party as I see it. दिल्ली में उनके सोशल वेलफेयर मंत्री को रिजाइन करना पड़ा मैस कन्वर्जन्स को लेके, उसका भी असर गुजरात में देखा, जहां पे केजरीवाल के पोस्टर्स लगाए गए विद शोइंग स्कल कैप्स, अ मेटाफर फॉर बीइंग प्रो मुस्लिम एंटी हिंदू. दूसरा, अब गोपाल इटालिया को निशाना बनाया जा रहा है. आप इसको किस रूप से देखते हैं, जो उन्होंने भाषा यूज की? एक सवाल, अभी तक आम आदमी पार्टी से ये सीधा जवाब नहीं मिला है कि ये भाषा क्यों यूज की गई. किसी ने वीडियो के बारे में नहीं कुछ बोला, बस ये टेढ़ी मेढ़ी बात कर दी कि भाई ये पाटीदार समाज पर निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन वीडियो की जो भाषा है उसके बारे में आम आदमी पार्टी ने ऑफिशियली कोई एक्सप्लेनेशन दी नहीं है. No need, Barkha, no need of explanation, because this is not the perception. Nowadays, the perception of politics has been changed, and it has been changed by Aam Aadmi Party over the years. Everybody has seen. And the Italia's video, which you are showing, which everybody is showing, is a very, very old video when he was not even in Aam Aadmi Party. And then moreover, this kind of video you can find over the years in many platforms. And I have seen many before that. So this BJP, I don't know why they are worried. Prime Minister's stature has been compared with an ordinary admi who was not even the AAP member at that time. And why they are worried? It is very clear that BJP is losing very clearly in Gujarat, and they are worried about 2024. You see, over the years, our Prime Minister, who is supposed to be a role model for our country, our political system, and our political leadership, he is all creating such kind of nonsense wordings with one minute. I must intervene here. I do not think. 1 minute, sir. Whether the video is old or not, in the age of the media, you live and die by what you're caught saying on camera. And the word Neech is casteist. And in the context of the Prime Minister, it can particularly be considered casteist. I don't know the political consequence, but I don't agree कि उसके वीडियो पुराने होने से वो आज के तौर पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता. 1 minute, Mr. Khan. 1 minute. You are connecting with Aam Aadmi Party. You are singling out Aam Aadmi Party for this. It has been going on since long. And
I accept that. Okay, they are doing it because they are too much worried about Gujarat. They are seeing very Mr. big Khan. defeat in Gujarat. That's why they are worried. And Okay, moreover, okay, don't if you shout. can see Don't the shout. Don't shout. Don't shout, Mr. Khan. Hang on. Hang on. You've had your say. Let me go to the others. You are basically saying बीजेपी डरती है आम आदमी पार्टी से, इसलिए वो इतना शोर मचा रही है. Let me bring in Arati and Hardik before I take this back to Dr. Shraddha. Arati, the big picture, as I said, the Aam Aadmi Party has been on the defensive in Delhi. It actually ousted its social welfare minister for that mass conversion meet, Mr. Rajendra Pal Gautam. But it's standing by Gopal Italia being on the front foot in Gujarat. Two very different responses, Arati, if I can bring you in now. Well, as far as the Delhi controversy is concerned, of the conversion, controversy over Gautam, the Aam Aadmi Party has always been very defensive on matters related to religion, particularly Hindu. And if you remember when we had those communal riots in Delhi 2 years ago, the Aam Aadmi Party hardly appeared anywhere when those women were sitting on fast protesting, against the CAA bill. Aam Aadmi Party was nowhere to be seen. So on anything related to Hindu religion, Aam Aadmi Party has always been defensive. It remains silent. And, it is so scared of being tagged as anti-Hindu that I think that, that is why, Mr. Gautam had to resign and go. But in Gujarat, of course, it's completely different because this is nothing to do with religion. This is the Prime Minister. And they're very happy to take on the Prime Minister. They're very happy to take on people. You know that they're famous for this, calling Ambani something, calling Modi something, calling, whoever their opponent is. But except Arti, usually, and we heard this from Dr. Shraddha, usually in Gujarat, when you target the Prime Minister, this has been true since 2002, when you target the Prime Minister becomes even more popular. This is the political trope of Gujarat. Absolutely. And I mean, if you remember that famous, line by Sonia Gandhi, when she called him Maut ka Saudagar, and he just turned it around and used it to his advantage and swept those elections. So yes, if you target Modi in Gujarat, you are going to, just strengthen him. But I don't think the Aam Aadmi Party is looking at that. What the Aam Aadmi Party is looking at, because there is an anti-Modi vote as well. So, the Aam Aadmi Party is looking at trying to sweep up as much of that anti-Modi vote as it can. So, you strengthen the Prime Minister in his own, amongst his own voters. But the anti-Modi voter remains anti-Modi. So, I think that is what the Aam Aadmi Party is looking at, to try and get as much of that vote as possible, because clearly they would like to emerge as the number 2, party. They would like to be the main opposition in Gujarat. I don't know, according to Yashwant's survey, that's not happening this time. But, they are playing a long game. I mean, but Yashwant's survey also makes an interesting point about they're fighting for the number 2 position, Arti, this time. And let me bring in Hardik now, but actually priming to be the main contender or in the race for the main contender, as happened in Punjab. They skipped one election when everybody thought they were going to win. And then in another 5 years, they were there for the taking. Hardik, let me bring you in. I'm actually, sorry, Arti, you're trying to say something? Arti? Just want to say one thing, that in Punjab, they did not win that election, but they did emerge as they won about 20 seats. You remember? And they were the main opposition in Punjab. So, I don't know whether that's going to be possible in Gujarat. Well, by Yashwant's survey, they're only projected to get between 0 to 2 seats, but pick up 17% of the vote share. Now, Hardik, I am actually quite fascinated by the dualism of the AAP response. Delhi mein ek response to their Dalit minister who then converted to Buddhism because of the posters that emerged in Gujarat. So there's a Gujarat link there. And this completely on the front foot attacking the Prime Minister. Actually, in previous elections, Mr. Kejriwal was careful not to target Modi directly. That seems to have changed, Hardik. What do you think is going to be the fallout? Barkha, I think, there's that famous Hindi dialogue, nigahein kahin pe nishana kahin aur. So, the Gopal Italia's bluster, ये जो aggressive stance उन्होंने लिया है आम आदमी पार्टी ने, they will talk about the Prime Minister, but वो जो बोलना चाह रहे हैं वो ये है कि जो non BJP space है उसमें हम है, we are on the ground,
द आप चीफ अरविंद केजरीवाल वो कैंपेन कर रहे हैं 2 बार 3 बार वीक में, उनके होर्डिंग सब जगह पे हैं, पोस्टर्स सब जगह पे हैं। ये जो अग्रेसिव रवैया है वो ये बताने का है कि कांग्रेस नहीं है इन गुजरात, उनका फेस कौन है, उनका कैंपेन क्या है, उनके आइडियाज क्या हैं, दे आर नॉट इन कॉन्वर्जेशन, सो वी आर द वंस, एंड वो ये स्पेस कैप्चर करना चाह रहे हैं। जी, लेकिन हार्दिक, एक डेविड गोलायत का भी मिथोलॉजी है, राइट? द पार्टी दैट सेज भाई हम छोटे लोग हैं, ये बड़ी बड़ी सरकारें हमारे पीछे आ रही हैं, पहले हमारे मंत्री या पूर्व मंत्री को ये दिल्ली में पुलिस बुला के क्वेश्चन करती है, अब देखिए ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये तो सारे ही पाटीदार के खिलाफ है। इफ वी कैन जस्ट फर्स्ट ब्रिंग अप द स्लाइड ऑफ द पटेल वोट, द पटेल वोट, एज यू ऑल नो, is extremely critical, and if you have a look at that slide, you will see how sizable the Patel vote is in swinging elections. Now, looking at these numbers, I just want to also play out for you what Raghav Chadha has actually said, and how they are trying to position this. And remember, Gopal Italia used to be a comrade of Hardik Patel. Hardik Patel was leading the Patidar agitation, and Hardik Patel has since joined the BJP. So many dots to connect there. And before you respond, Hardik, and then Dr. Shraddha, just listen in to what Raghav Chadha had to say. सामान्य साधारण से सीधे से पाटीदार परिवार के एक बेटा जो राजनीति में अपने लिए एक जगह बना रहा है, मुकाम बना रहा है, उसे रोकने के लिए गोपाल इटालिया को अरेस्ट किया गया। ये अरेस्ट एक नेता का नहीं है, ये अरेस्ट एक समाज पे प्रहार है, ये अरेस्ट आम आदमी पार्टी को लेकर, अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता को लेकर भारतीय जनता पार्टी का खौफ और भारतीय जनता पार्टी का डर दिखलाता है। First Hardik, then Shraddha. Hardik, talking about Hardik Patel, so Hardik, calling Hardik in this case. I suddenly, when I was asking you the question, I said, am I saying something wrong? And then I realized the irony of what I'm asking you. So let me ask Hardik about Hardik. Here's the question. As I said, Gopal Italia, Hardik Patel used to be on the same side. Now they're on opposite sides. And the AAP is positioning this as an attack and a humiliation of the Patidar community, just like the BJP is positioning it as an attack on the Prime Minister. Your thoughts on that? So, Barkha, in 2017, BJP went down to double digits after a long time in Gujarat. They ended with 99 seats. And there were two primary reasons. One was the Patidar agitation, as we all know. The other was the pressures from the GST implementation that was fresh at the time. Now, 2022, the agitation has died down in that sense to a significant degree, and Gopal Italia is no Hardik Patel in terms of his pull with that community. But we can clearly see where the Aam Aadmi Party wants to drive the narrative or wants to position itself with, because they sense that was the area where the BJP struggled a bit the last time around. From another larger point I want to make is, if you look at it from the BJP's perspective, Gujarat has traditionally been a two-horse race. And so the more oxygen you give to the Aam Aadmi Party, the more they are in conversation, and you can kind of like create a third front, the bigger margin they get. So I think that is also a big factor why you are seeing a lot of Aam Aadmi Party on TV, on debates. They are, like so Smriti Irani giving them oxygen. They don't mind the controversy. Shraddha ji, इस पे आपकी टिप्पणी चाहिए। दो चीजें यहाँ पे ये बात की गई है कि जितना आप आम आदमी पार्टी के बारे में बात करेंगे, आपके बड़े बड़े मंत्री उनके बारे में बात कर रहे हैं, स्मृति ईरानी उनके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ये क्या आप उनको ज्यादा ऑक्सीजन नहीं दे रहे? ये एक सवाल। और दूसरा सवाल कि क्या आप आम आदमी पार्टी का जो राइज है उसको परफेक्टली कैलिब्रेट कर सकते हैं? जैसे यशवंत ने कहा कि अभी कुछ सूट करता है कि कांग्रेस को थोड़ा वीकन करें, ऑपोजिशन को स्प्लिंटर करें, लेकिन एक दिन ऐसा भी हो सकता है वेयर दे आर कंसिडर्ड एन ऑल्टरनेटिव। उन्हीं का सर्वे कहता है कि 16% people polled back the Aam Aadmi Party candidate as their choice for chief minister. तो इस पे आप क्या बोलेंगी? आपको क्या लगता है कि ये जो प्रधानमंत्री के बारे में भाषा है वो गलत जरूर है, लेकिन क्या उसके बारे में इतनी बात करके क्या आप आम आदमी पार्टी को एक लाइफलाइन नहीं दे रहे स्ट्रांग होने के लिए? देखिए, किसी भी पार्टी की जहां तक आप लाइफलाइन की बात करें तो बिल्कुल नहीं। आम आदमी पार्टी ने सारी जो अपनी लाइफलाइन है खुद ही खो दी है, क्योंकि उन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया है। जहां तक कि अभी आपने राघव चड्ढा का सुना था कि पाटीदार समुदाय आहत हुआ है। एक्चुअली मैं राघव चड्ढा जी को बोलूं कि आप गुजरात आइए और पाटीदार समुदाय का कितना कंट्रीब्यूशन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, पहले उसे समझिए।
इसके पहले उन्होंने एक बार ऐसा कहा था कि मनीष सिसोदिया जी को कह दिया कुछ राजपूतों का अपमान हो गया है। बरखा जी, मैं राजपूत हूँ। जब मेरे पर मतलब आम आदमी पार्टी ने हमारे मंदिर पे यानी कमलम पे जब हमला किया था, मैंने एफआईआर की थी। इन लोगों के सोशल मीडिया ने मेरे और मेरे स्वर्गस्थ माता पिता के बारे में इतने सारे डेरोगेटरी कमेंट्स, इतना डेरोगेटरी बोला था जिसकी अगर आप लिस्ट निकालेंगे तो आप खुद शर्मा जाएंगे एक महिलाओं के कि किस लेवल तक मुझे बोला गया है। तब क्या मैं राजपूत की बेटी नहीं थी? जब मनीष सिसोदिया आ जाते हैं तब राजपूत हो जाता है, गोपाल इटालिया जी आ जाते हैं तब पटेल हो जाता है। इट्स नॉट अबाउट द एनी कास्ट, इट इज नॉट अबाउट द राजपूत, इट्स नॉट अबाउट द पटेल, इट इज नॉट अबाउट द बनिया है या हमारे यहाँ पे जो एससी समुदाय एसटी समुदाय। आप राजनीति में आए हैं, किसके लिए आए हैं? सिर्फ आप अपने कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के लिए आए? आप तो कहते थे कि आप कुछ नई राजनीति करना है, तो फिर कास्ट बेस्ड राजनीति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास मुद्दे नहीं है। आप गुजरात को क्या दे सकते हैं, इस पे आपका कोई मुद्दा नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, वो आपके पास कोई रोड मैप रेडी नहीं है। पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए, पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए ये जो पर्सनल अटैक है, कोई मुद्दा नहीं गोपाल इटालिया के पास। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर सर के लिए जब ये लैंग्वेज यूज की तो अभी आके वो माफी मांग सकते हैं कि भाई ठीक है उस टाइम पे मैंने की, मैं माफी मांगता हूँ। एक्चुअली इस वीडियो के बारे में वो सीधी तरीके से आम आदमी पार्टी कुछ कह ही नहीं रही। अकील साहब प्लीज, आई विल गिव यू अ चांस टू स्पीक। मेरा सवाल सुन लीजिए आप। नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए अकील साहब, मेरा एक सवाल है, उसके बाद आप बोलिए। आपने कहा कि देयर इज नो नीड टू क्लैरिफाई दिस वीडियो। आई डोंट अग्री विद यू। आप एक तरफ तो इतना डिफेंसिव हैं कि आप अंबेडकर, जिनकी तस्वीरें लगी हुई हैं मुख्यमंत्री के ऑफिस में, हर मुख्यमंत्री के ऑफिस में, अंबेडकर के वाउस को लेकर आप अपने एक दलित सहयोगी को बेसिकली यू ड्राइव हिम आउट, यू से रिजाइन कर लो, बीजेपी आपको निशाना बना रहा है। दूसरी तरफ जहां पर सचमुच में एक डेरोगेटरी भाषा, एक अवॉइडेबल लैंग्वेज यूज की गई है, उस पे आप कहते हैं कोई जरूरत नहीं। दूसरी बात आपने कहा यू सिंगल आउट दी आम आदमी पार्टी। बिल्कुल नहीं। बीजेपी के एक पार्लियामेंटेरियन है परवेश साहिब वर्मा, उन्होंने बहुत ही गंदी भाषा में मुसलमानों का के बारे में बात की। आई कॉल दैट आउट। तो मैं सिंगल आउट नहीं करती हूं। अकील साहब आप क्या कहेंगे? अनम्यूट मिस्टर। मैं 2011 से अरविंद जी से जुड़ा हूं और जंतर मंतर पे जो हमारा जन लोकपाल बिल के विरुद्ध हुआ था उसमें मैं 5 दिन के भूख हड़ताल पर भी था और मैं तब से जुड़ा हुआ हूं और मैं एक वर्कर हूं, एक्टिविस्ट हूं और पूरी तरह से जुड़ा हुआ हूं आम आदमी पार्टी से। रही बात, आप मुझे मत बोलिए कि मैं आम आदमी पार्टी से अभी समर्थक हूं या कुछ हूं। मैं आम आदमी का बंदा हूं, आम आदमी से बेसिकली जुड़ा हुआ हूं। दूसरी बात यह है, देखिए दूसरी बात यह है कि ये जो जितनी बातें बोल रहे हैं हमारी मैडम है कि मतलब आम आदमी पार्टी ही सबसे ज्यादा मतलब गलत बोलती है पूरे देश में। ओवर द इयर्स आप देख लीजिएगा हिस्टोरिकली कि भाजपा के कितने लोगों ने कितनी गंदी गंदी बातें की हुई हैं और किस तरह से लेडीज के अगेंस्ट में, महिलाओं के अगेंस्ट में और किस तरह से रेपिस्ट को उन्होंने सपोर्ट किया है। और गुजरात में देखिए, सुन लीजिए पहले, गुजरात के अंदर भी ये जो अभी जो है उसको गार्लैंड कर रहे थे रेपिस्ट और मर्डरर को, 2 साल की बच्ची के मर्डरर को। तो ये तो इनका जो आपका चेहरा पूरे देश जानता है, अच्छे से जानता है। इसीलिए जो है मोदी जी और बीजेपी के सारे लोग परेशान हैं क्योंकि गुजरात की जनता आजिज आ गई है इनके खिलाफ। इन्होंने 27 साल से कुछ भी नहीं किया है लोगों के लिए, जो बेसिकली नीड्स है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और सबसे ज्यादा जरूरत यही है। आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन कुछ भी कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी इधर उधर कर लीजिए, लेकिन बेसिक जो समस्या है हमारे देश। Okay, hang on, Mr. Khan. Sorry, I'm sorry to interrupt you, but I need to get in a question. This is not a monologue. I've heard you, and all the incidents you've spoken about, including the release of the convicted rapist of Bilkis Bano, have been a big issue on this platform. Arati, I want to bring Mr. Khan, one at a time, please. This is not a shouting match on television. We need to hear each other and understand each other. Hang on, please. I want to bring in Arati and Hardik and then start taking last comments. Arati, the big picture, agreed that there have been a lot of coarseness of language by many of the BJP leaders, agreed that the release of the convicted rapist of Bilkis Bano is terrible. But by the way, the Aam Aadmi Party has said nothing about it. It is actually very clearly steering clear of any identity politics, at least when it comes to religion. Caste politics, different, but religious politics, steering clear. Arti, your thoughts? Arti? No, absolutely. They are really, really scared of being tagged as anti-Hindu.
And when this Gotham controversy erupted, I think the BJP managed to hit a raw nerve in the Aam Aadmi Party, because it called them anti-Hindu, for those oaths that he took that day. So they are very, very scared on it, and it is really actually very sad that they did not say anything on the Bilkis Bano, the release of the Bilkis Bano rapists, because that was something. It was, I think it was bad in law, but more than that, I mean, it's just something which is so shameful. That people, they were not just, they were rapists and murderers both, and yet they got this sort of relief. The thing with the Aam Aadmi Party is that it is playing for, as I said, it is playing a long game. It is hoping that one day it will replace the Congress everywhere. That's what it's hoping for. And that's why it is, targeting Gujarat, because they feel that in Gujarat, the Congress is weak. Unlike 5 years ago, when the Congress was, Rahul Gandhi was out on the streets and he was doing a remarkable job with those three young, boys, who he picked up. But if you notice, Rahul Gandhi has been absent from Gujarat. You barely see him. You barely hear him. That's because his yatra is actually skipping Gujarat. Actually skipping Gujarat, and the Congress seems to be completely inactive. So I think the Aam Aadmi Party is rightly calculated that that's one state where they can, perhaps make an entry, and even if they don't win or come second this time, they will be on the road to being the main opponent to the BJP. But the fact remains that as long as this is not Delhi. And I think, we should be very, very clear about that. In Delhi, in the elections, you remember as far back as 2014, or, they said ki upar bada Modi, niche chota Modi, and Arvind Kejriwal had captured the hearts of people in Delhi. So, but, Modi is Modi in Gujarat. He's unbeatable. And I think, what the BJP is really trying to do, and which is why they are promoting Aam Aadmi Party so much, is to get the best ever score that it has got. You remember, immediately after the, in 2002. 2002, they did very well. But in all subsequent elections, the number of seats came down. So I think they just want to go back to that 2002 and plus. Yeah. So, everything, I mean, the more they build up the Aam Aadmi Party, the more they divide the opposition votes. It's such a clear ploy that, nobody's really fooled by it. Okay, so we just have 30 seconds for our three remaining guests to make concluding remarks. Hardik, I'll start with you, then Aqueel Khan, and then Dr. Shraddha Rajput. Hardik, you can't perfectly calibrate how much attention you give to your opponent. That is actually what the BJP might be trying to do here. Ki, okay, thodi baat karo, opposition ko divide karo. But as the surveys before, I'd be very keen to see surveys after this episode. I don't know how it's going to go down. But, I remember 2002, Mr. Modi himself made Gujarati pride, Gujarati Asmita, the cornerstone of his sort of rise from the shadows of 2002. And that rise, he's never looked back since. This time too, the BJP is talking about Gujarati pride actually having come under attack. And these guys are countering by saying, no, it's the Patidar. It's a caste group that you've attacked. So it's personality versus caste. How's it going to play, Hardik, you think? Arvind Kejriwal is one of the fastest learners in Indian politics. The big lesson that he learned by going national in 2014 is that you cannot directly compete with the BJP without structure, cadre, resources, and plus the popularity of the Prime Minister. So since then, he has gotten a bit mellow in his direct attacks of the Prime Minister. And what he's learned is that there are certain things where BJP is not touchable. So he's scraping at the Congress votes in subsequent states. And, others have also mentioned, he does not want to come across anti-Hindu. There is also a certain nationalistic narrative in his messaging. So he has upped his game over the last few years, and my sense is he's going to go after the Congress vote in Gujarat and in other states as well. Like, that is his first goal. I don't think he's aiming to take on the BJP now after what's happened in 2014. Aqueel Saab,
You made a lot of examples of coarseness of language by the BJP or some BJP leaders. You spoke about the release of Bilkis Bano's convicted rapist. I want to ask you, Gopal Italia, is he going to be the chief ministerial face of the Aam Aadmi Party campaign? क्योंकि अभी तक किसी का नाम नहीं आया है. Aqueel Khan साहब. Barkha, we have never propagated any personality. We are concerned with the welfare of the people of our country. That is the foremost, most important aspect of our political movement. So the most important thing, I would like to say 27 years, BJP did nothing for those people, those who are now otherwise 27 years, if you have ruled a state, nobody would have questioned your credibility or your work. Now, 27 years after, the people are started questioning what you have done for the state. That is the very important aspect of this present election. And Aam Aadmi Party is the only party. No, don't concern about Congress or anything. We are directly attacking BJP and we are going to replace BJP. Congress is nowhere in the field. So I would like to say that the basic requirement of our country, basic need of our people, we must concentrate, and we are focusing on that, and we have delivered in Delhi and Punjab, and we will do it in Gujarat. Let's see what happens if the elections are just less than 2 months away. Yes, sure. अच्छा, Dr. Shraddha, last word to you. Dr. Shraddha, ये कितना बड़ा मुद्दा बनने वाला है चुनाव में, ये जो गोपाल इटालिया के वीडियोस है? देखिए, मुद्दा ये बनेगा बरखा जी, देखिए मुद्दा हमारे लिए ये रहेगा कि हमने जो विकास के काम किए, हम हमारा रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे और हमें वोट्स मिलेंगे. मुद्दा ये है कि ये गुजरात की अस्मिता है. प्रधानमंत्री जी और उनकी माताजी पे कही गई टिप्पणी है. 6.5 करोड़ के सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं. 6.5 करोड़ गुजरातियों का मान सम्मान पूरे आज दुनिया में है. ये मान सम्मान का प्रश्न है, और सम्मान के प्रश्न पे गुजरात की अस्मिता क्या जवाब देगी, आप 2022 में जरूर देखेंगे. और जहां तक कि खान साहब, अगर कुछ हुआ ही नहीं है तो आप तो ऐसे कह रहे हैं कि रन के किनारे बैठे और पानी ही नहीं मिला. कुछ दिन आइए गुजरात में, गुजारिए मेरे साथ, तो फिर आपकी जो जितनी भी भ्रमणाएं ये दूर हो जाएंगी. थोड़ा सा चश्मा उतारिए, थोड़ा गुजरात आकर देखिए. Chaliye, thank you to Dr. Shraddha, to Aqueel Khan, Hardik and Arati, and before that to Yashwant. We can talk all we want. The last word belongs to the voter. I don't think anybody, including Arvind Kejriwal, believes that the BJP is not going to win Gujarat. I think, as Yashwant said, this is a fight for the number 2. What has to be seen is ये जो videos आए हैं गोपाल इटालिया के, क्या इससे number 2 की जो रेस है उसको कितना फर्क पड़ता है? That is what I'd be very keen to watch. But for now, thank you for joining us, and to our audience, see you tomorrow. Namaskar. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.